So बच्चों, this is 8th standard class. Now, in this chapter we are going to learn regarding the definitions of units. What do you mean by 1 kilogram? What do you mean by 1 meter? What do you mean by 1 degree Celsius temperature like this? Clear? What do you mean by 1 mole of substance? Boys and girls, myself I am Professor Chandra Borse from Hingoli, Maharashtra. Since from last near about 9-8 years, I am teaching physics, chemistry and biology of Pearson IIT and NEET Foundation, which is from Cambridge, England. Right? It is a very good foundation. बच्चों जिसको foundation कहना चाहिए ये original foundation है. इसमें जो syllabus है, right? Especially 9th and 10th standard, it has much more depth even than 9 ICC syllabus also. CBSE तो बच्चों हमारे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन 9th और 10th का जो syllabus है हमारा, right? It has much more depth even than ICC syllabus. ठीक है ना बच्चों? So we will continue this chapter, definitions of fundamental units or units of fundamental quantity or units of definition of units of fundamental quantities. In short, बच्चों थोड़ा सा रिवीजन करेंगे. Physical quantity. What do you mean by physical quantity? Any quantity which can be measured or a measurable quantity is called as a physical quantity. जो भी quantity होती है बच्चों, if we can count it, we can calculate it, we can measure it, then that quantity is called as a physical quantity. What do you mean by unit? अब unit मतलब क्या होता है बच्चों? When we try to measure the physical quantity, then that time we have to compare that physical quantity with other standard quantities, and that other standard quantities are called as a unit. Clear? So boys and girls, physical quantities जो होते हैं, what do you mean by physical quantities? A quantity which can be measured is called as a physical quantity, and these physical quantities are divided into two types. On what basis? On the basis of magnitude and direction. The physical quantities which can be expressed completely by its magnitude, मतलब how much? How much? Suppose for example the length of rod is 5 meter. Clear? Meaning प्राप्त हो गया. Direction बताने की जरूरत है क्या? So that quantities are called as a scalar. Physical quantities which can be expressed completely by its magnitude are called as a scalar quantities. Direction is not required. Clear? इसके लिए examples, speed, right? Distance, density, mass, length. These are the certain examples. What do you mean by vector quantity? Another type क्या है? Physical quantity on the basis of magnitude and direction. That is vector. Vector quantity क्या होती है बच्चों? The physical quantities which can be expressed completely by its magnitude and direction. Both magnitude is also required. Means how much? कितना? वो भी required है. At उसका direction. In east direction, in northeast direction, in southwest direction, whatever it may be, जो भी है. Clear? Direction is also required and magnitude is required. That quantities are called as a vector quantity. Example, इसके examples, right? Velocity, force, torque, acceleration, displacement. These are the certain examples of वेक्टर क्वांटिटी. ये लास्ट वीडियो में बच्चों हमने बहुत डिटेल दिया वाला है, आज थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं. देन अगेन फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू अगेन टू टाइप. किस आधार के ऊपर? यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. अब फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू ऑन द बेसिस ऑफ
independent on the basis of whether it is independent or not, means whether it is depend on other physical quantities. Clear? तो फिजिकल क्वांटिटी के दो प्रकार होते हैं बच्चों। किस आधार के ऊपर? whether that physical quantity it is depend on the other physical quantity to get the value of its unit or not, means independent है या depend है. Clear? That is fundamental. फंडामेंटल एंड डिराइव. इसका नाम ही देखो बच्चों क्या है? डिराइव मींस obtained by doing the calculation. Clear? So boys and girls, what do you mean by fundamental quantities? To obtain the value of units of fundamental quantity, we did not have to do calculation between units of other fundamental quantity or other fundamental quantity or other physical quantities are not involved to obtain the value of the fundamental quantity. Other physical quantities are not involved to obtain the value of units of fundamental quantities. So that's why these are independent. These are independent. ये कैसे बच्चों? Independent है. इसका जो भी वैल्यू है यूनिट का, it is fixed by the scientist. It is fixed by the scientist. For example, 1 kilogram of mass. Why mass is called as a fundamental quantity? Because why mass is called as a fundamental quantity? Because scientists लोगों ने क्या किया बच्चों? One certain cylindrical lump लिया उन्होंने. Clear? And it is made up of by platinum and iridium alloy. इरिडियम एंड प्लैटिनम ये जो एलिमेंट है उसके एलॉय से बने वाला है. और साइंटिस्ट लोगों ने ये ऐसा सिलेंडर बनाया और बता दिया कि दिस इज 1 किलोग्राम मास. दिस इज 1 किलोग्राम मास. अब इसमें दूसरी कोई फिजिकल क्वांटिटी, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, टॉर्क, डेंसिटी, लेंथ कुछ इन्वॉल्व है क्या? टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, पावर, ऐसे कोई अदर फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट इन्वॉल्व है क्या इसमें? तो ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ 1 किलोग्राम मास? नहीं. इट इज डिसाइडेड बाय द साइंटिस्ट. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. हु? मास. एंड the unit of mass is kilogram. This is 1 kilogram. Then scientists divide it into equal 1000 part. इसको डिवाइड किया साइंटिस्ट लोगों ने by 1000, right? So value of 1 part साइंटिस्ट लोगों ने बता दिया that is 1 gram. Clear? इसका भी वैल्यू कैसे मिला? कोई अदर फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है क्या? नहीं. So boys and girls, fundamental quantities are the physical quantities which are independent. To obtain the value of their unit, other physical quantities or their units are not involved. Clear? Now boys and girls, there are 7 fundamental quantities which are that mass, length, time, temperature, electric current, amount of substance, and luminous intensity. Luminous
intensity. How many? These are 1, 2, 3, 4, 5, 6, and luminous intensity 7. Clear? Their unit, SI unit, mass of length, kilogram, SI unit of length, meter, that is of time, Kelvin, time, second, temperature, Kelvin, electric current, ampere, amount of substance, mole, luminous intensity, candela. So these are the 7 fundamental quantities. And by doing the calculation between these fundamental quantities, other physical quantities are obtained, and these are called as derived quantities. So ये इंडिपेंडेंट है. फंडामेंटल क्वांटिटी कैसे बच्चों? इंडिपेंडेंट है. These are independent, and these derived quantities are dependent. These are dependent. Example, area. Why area is called as derived quantity? See here, we are having one rectangle. Area of this rectangle, this is length, this is breadth. So इसका जो area है, its area is equal to length into breadth. So this is a length और breadth क्या है? When this one length it is multiplied by breadth means another type of length only. And all of you know that length is a fundamental quantity. When one length is multiplied by another length, then that time we will get the area of square or rectangle. Clear? When three lengths are multiplied of this type of structure, then that time we get its volume. So volume is also derived quantity. Speed, derived quantity. Why? Speed is equal to distance divided by time. Distance is nothing but it is one type of length only divided by time. Divided by time. So length is fundamental quantity, time is fundamental quantity. तो ये speed क्या हो गया? Derived quantity. Like this, acceleration, force, torque, right? तो ये क्या है बच्चों? Derived quantity. Density, derived quantity. Why? Density is equal to. Why density is a derived quantity? बोलिए. Density is equal to mass divided by volume. So mass is a fundamental quantity, volume, length into length into length. These all three are fundamental quantities. So by doing the calculation between this mass and length into length means volume, we get the value of density. So that's why density is derived quantity. Clear? So बच्चों, ये shortcut में these are the different types of physical quantities: scalar and vector, fundamental and derived. Now, boys and girls, we are going to learn the definitions of SI units of fundamental quantities. Definitions of SI units of fundamental quantities. तो ये fundamental quantity जो भी है इसके SI units जो होते हैं. Sorry boys, मेरा mic, where is my mic? माइक लगाना भूल गया बच्चों. 1 minute please. Sorry बच्चों.
फिर भी मुझे लगता है कि मेरा आवाज तो क्लियर होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा समथिंग क्लियर हो जाएगा. So boys and girls, now definitions of SI units. Definitions of SI units of physical quantities. So first physical quantity, that is mass, and its SI unit is 1 kilogram. That is इसका SI unit 1 kilogram. So what is meant by 1 kilogram? मास नहीं लिखा तो भी चलता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है. What do you mean by 1 kilogram mass? A certain lump having a certain mass which is made up of by platinum and iridium alloy, which is kept in a glass box maintaining 0 degree Celsius temperature into the office of International Bureau of Measurement, right, which is located into Paris, which is the capital of France. That mass is called as 1 kilogram, and its equal mass is also 1 kilogram. It's a 5 times, that is 5 kilogram. It's a 1000 part, it is called as a 1 gram. It's a 100 part, is called as a 1 quintal. It's 1000 part, 1 gram, and multiply that 1 kilogram by 1000 means 1000 times, that is 1 metric ton, 1 ton, sorry. क्लियर? तो बच्चों 1 किलोग्राम मास क्या होता है, इसका वैल्यू क्या साइंटिस्ट लोगों ने कैसे डिसाइड किया? certain mass made up of by platinum and iridium alloy. Kept in glass box maintaining how much temperature of that inside? 0 degree Celsius temperature. Right, maintaining 0 degree Celsius temperature, and box has no any gas in it. Any gas in it means it is kept in vacuum. It is kept in situation कैसी है बच्चों? Inside the box vacuum है, vacuum में kept किया. टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस. Where? In International Laboratory of weighing and measurements, whatever it may be. लिख देंगे हम लोग ये भी. In where it is located? P capital Paris. In which state? France. This is the definition of 1 kilogram mass. Very easy. इसको other words में भी you can mention it, right? But meaning must be same. What do you mean by 1 kilogram mass?
1 kilogram mass is nothing but it is a mass of certain lump of which is made up of by platinum and iridium alloy, which is kept in vacuum in glass box, maintaining temperature 0 degree Celsius, which is placed in Office of International Bureau of Measurement and Weight, which is present in Paris, France. Clear? तो ये हो गया बच्चों 1 किलोग्राम मास का डेफिनेशन. अदर कोई फिजिकल क्वांटिटीज में इन्वॉल्व है क्या? एक्सेलरेशन, टाइम, स्पीड वगैरह नहीं. That's why its value it is fixed by the scientist. It is independent. Value of 1 kilogram it is fixed by the scientist. It is independent. So that's why mass is called as fundamental quantity. Mass is called as fundamental quantity. और 1 किलोग्राम मास जो भी है उसके 1000 इक्वल पार्ट के साइंटिस्ट लोगों ने, and from them one single part is called as a 1 gram. 1 किलोग्राम का 100 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, that is 1 क्विंटल, like this. उसके यूनिट्स मतलब जो भी है समझो, राइट, उसके मल्टीपल एंड सब मल्टीपल यूनिट्स आर ऑब्टेन. नाउ नेक्स्ट, mass, length, and SI unit of length is meter. So what is meant by 1 meter length? इंटरेस्टिंग है. सोचो बच्चों इसको कैसे साइंटिस्ट लोगों ने इसको कैसे मतलब फाइंड आउट किया होगा, राइट? फॉर दैट आपको पता है नॉर्मल टेम्परेचर, राइट, एसटीपी, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नॉर्मल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है. क्लियर? ठीक है ना बच्चों? सो बॉयज एंड गर्ल्स, 1 मीटर डिस्टेंस मींस 1 मीटर लेंथ, व्हाटएवर इट मे बी, जो भी होगा, सब मान के चलिए कि ये 1 मीटर है. हाउ मच इट इज? 1 मीटर. बट how scientists decided that the value of this length is 1 meter? On what basis its value? On what basis? Prasanna, thank you. Yes beta. Boys and girls, this is Prasanna Kabra. He is my first foundation batch student. Now he is doing MBBS in government college in Latur. So boys and girls, what do you mean by 1 meter length? 1 meter length क्या होती है बच्चों? तो इसका जो भी वैल्यू है, it is decided by the scientist. It is decided by the scientist. ये किसने डिसाइड किया बच्चों? साइंटिस्ट लोगों ने, right? And for that they have taken the orange light which is emitted by the krypton atom at normal temperature, pressure. Clear? किसका एटम लिया? Which element? Krypton atom, which emit which light? Orange light. And its wavelength approximately it is 605 nanometer. वो जो भी वेवलेंथ है इसका, क्लियर? wavelength of orange light it is multiplied by 1656.73. भैया जो वेवलेंथ है, क्लियर? वेवलेंथ ऑफ which light? Wavelength of orange light. Wavelength of orange light. Orange light is emitted by, boys and girls, orange light is emitted by krypton atom at normal temperature, pressure. ठीक है?
कौन सा लाइट इमिट कर रहा है? ऑरेंज लाइट. इट्स wavelength is 605788021 and it is multiplied by 1650 763. It is multiplied by 1650 763.7. Now boys and girls, wavelength, इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी. वेवलेंथ ऑफ क्रिप्टॉन लाइट, क्रिप्टॉन का जो भी है, क्रिप्टॉन एटम्स, वेवलेंथ ऑफ क्रिप्टॉन एटम्स विच लाइट, ऑरेंज कलर लाइट, और ये कितना होता है बच्चों? अप्रोक्सीमेटली 605 नैनोमीटर. 605 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली बॉयज एंड गर्ल्स? 605 नैनोमीटर. लेकिन करेक्ट फिगर है 605 नैनोमीटर, 605.78021. करेक्ट कितना है? परफेक्ट. 605 पॉइंट, पॉइंट के आगे बच्चों 78021, 78021 यूनिट क्या है? नैनोमीटर. दिस इज अ वेवलेंथ ऑफ orange color light which is emitted by krypton atom at normal temperature and pressure. अब ये वेवलेंथ क्या होती है बच्चों? सी लाइट क्या है? लाइट इज नथिंग बट इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. Light has a dual nature. All of you know that. One is particle nature, another one is wave nature. So light how travel? Like this. Clear? So boys and girls, these two heights, these heights are called as a crest, and this depth it is called as a trough. So the distance between two consecutive trough or the distance between two consecutive crest is called as the distance. It is called as wavelength, or equal to that of, or Prasanna, or equal to that of is called as a wavelength, and it is denoted by Greek letter that is called as a lambda. Clear? So now the wavelength of orange color light which has been emitted by atom of krypton element, which has been emitted by atom of krypton element, it is very small. And how much this distance? Wavelength of orange color light which has been emitted by krypton atom कितना है बच्चों? Approximately 605 नैनोमीटर. लेकिन परफेक्ट कितना है? 605.78021 नैनोमीटर लेंथ. एंड अब जो भी लेंथ ये मिलेगा बच्चों, it is very minute length. We have to multiply this length. We have multiply this nanometer length by means of 1650.763.73. 1650.763.63. वेरी इजी. ऐसे इसको रीड करो बच्चों, या फिर 16,50,763.73. means here we have to multiply wavelength of orange color light which has been emitted by krypton atom at NTP. NTP means normal temperature pressure. How much it is? 605.78021 nanometer. This is its unit, composite unit. So ये दोनों के बीच में सम गैप होना चाहिए. लिटरली nanometer जो भी है. Now we have to multiply this wavelength of orange color light by means of 1650.763. Whatever इसका जो भी आंसर आएगा of this multiplication, that will be 1 meter
length, that is 1 meter length. तो बच्चों, how we can define 1 meter length? 1 meter length को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? Orange light emitted by krypton atom at normal temperature, pressure, right? इसका wavelength multiplied by this one is called as 1 meter length. So 1 meter length, it is a multiplication, means product of what? Wavelength of what? Wavelength of orange color light. Orange color light emitted by krypton atom at normal pressure, at normal pressure, this word is sufficient. And it is product of wavelength of orange color light emitted by krypton atom at normal pressure. अब इसके साथ में इसको प्रोडक्ट बनाएंगे तो इसको कैसा करेंगे हम लोग? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, इसको ऐसा करेंगे. क्लियर? ये मेरे वर्डिंग में दे रहा हूं बच्चों, कोई बुक में से देखकर नहीं दे रहा. 1 meter length, it is a product of 1650 763.73 and wavelength आ गया बच्चों, very easy. What do you mean by 1 meter length? 1 meter length क्या होता है बच्चों? It is nothing but it is a product of, means multiplication of. Product means multiplication of what? 1650.763 and wavelength of orange light, orange color light, orange color light emitted by what? Emitted by krypton atom at normal pressure. हो गया, very easy. Clear? So boys and girls, suppose this is a 1 meter length. So how we can get it? Suppose this is a wavelength. This is wavelength of orange color light. It is in nanometer. How much it is बच्चों? 605.78021 nanometer. We have to multiply that nanometer 605.78021 nanometer by means of 1650 763.73. अब वो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में this multiplication, this is the wavelength of orange color light, boys and girls. This is the wavelength of orange color light which has been emitted by krypton atom at normal pressure. We have to multiply it by
This is a nanometer. This distance is nanometer. How much nanometer it is? 605.78021 nanometer, and we have to multiply it by 1650763.73. ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो भी डिस्टेंस मिलेगा बच्चों, सपोज जो भी डिस्टेंस मिलेगा, दैट इज 1 मीटर. इस 1 मीटर लेंथ it is a multiplication of or product of 1 meter length is a product of किसका 1650763.73 and wavelength of orange color light emitted by krypton atom at normal pressure. Whatever that distance we will get after this, that is called as 1 meter length. तो भैया ये 1 मीटर लेंथ जो है, इसको हमने ऑब्टेन करने के लिए दूसरे कोई फिजिकल क्वांटिटी का इन्वॉल्वमेंट मतलब आधार लिया क्या? नहीं. वेदर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी और फोर्स डिवाइडेड बाय whatever it may be, ऐसा कुछ किया क्या हमने? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, अदर फिजिकल क्वांटिटीज का डिवाइडेशन? नहीं. अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर नॉट इन्वॉल्व to obtain the value of 1 meter length. Clear? And that's why length is called as a fundamental quantity. Length is called as fundamental quantity. Whatever the quantity is there, and when we try to find out the value of its unit, in that time, if we found that the value of unit of that quantity, it is fixed by the scientist, it is not obtained by doing any calculation between other physical quantities or units of other physical quantity, then that quantity is called as a fundamental. It is independent. It is independent. समझ में आ गया बच्चों? What is meant by 1 meter length? 1 meter length क्या होता है बच्चों? 1 meter length is nothing but it is a product of or multiplication of 1650 763.73 and wavelength of orange color light emitted by krypton atom at normal pressure. इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन आएगा, that distance is called as 1 meter. And all of you know that wavelength of orange color light which has been emitted by krypton atom at normal pressure, how much it is? Perfect answer बता रहा हूँ बच्चों, 605.78021 नैनोमीटर. मीन्स 1 मीटर का 10⁻⁻⁹ पार्ट. क्लियर? ठीक है ना? नाउ नेक्स्ट वन, ये हो गया बच्चों. राइट डाउन दिस, या फिर इसके नीचे लिखता हूं. चलो ठीक है. दैट इज सेकंड. मास हो गया. दिस इज सेकंड एक्चुअली. 1 मीटर लेंथ. थर्ड, one second time. क्या है बच्चों? 1 second time. Clear? Now बच्चों, at normal temperature and pressure, atoms which are present into the elements vibrate. Clear? Left and right, to and fro like this. This is called as a vibration. This is called as vibration. Now boys and girls, scientists took to measure the 1 second time, that is cesium-133 atom of which element? This is the isotope of cesium. What do you mean by isotope? चलिए बोलिए बच्चों. What do you mean by isotopes? Isotopes are nothing but these are the atoms of the same element having same atomic number but different atomic mass number.
क्या होता है बच्चों, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है. फॉर एग्जांपल क्लोरीन आइसोटोप की क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, क्लोरीन 35 and chlorine 37. Clear? Now boys and girls, look here. Chlorine 35 into its center part, that is called as the center part of the atom in which proton and neutrons are present, that is called as the nucleus. Now look here, 17 proton and 18 neutrons are present. First orbit to second orbit 8, last orbit कितने होंगे बच्चों 7. So total प्रोटॉन कितने इसमें, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन्स 17, न्यूट्रॉन 18. 17 plus 18 35. So this is the atomic structure of chlorine 35 atom. Actually it is wrong. ये एटम का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है बच्चों. एटम इज 3D पार्टिकल. इसमें आपको मतलब ये तो 2D स्ट्रक्चर है, हाइट और ये विड्थ. बराबर. ये ऐसी लेंथ दिखा रहा है क्या, अकाउंट दिस एज अ लेंथ, दिस इज हाइट. विड्थ दिखा रहा है क्या सामने, नहीं. ऑन बोर्ड इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ 3D स्ट्रक्चर, राइट. तो ये लेकिन हम लोग समझने के लिए, चलो ठीक है. नाउ क्लोरीन 37 into its nucleus 17 proton and 20 neutron, central part of the atom, this is called as nucleus. Proton 17 है, electron must be 17. First है orbit to second 8, last 7. एक्चुअली इसमें भी बच्चों पार्ट होते हैं, सब ऑर्बिटल्स होते हैं. क्लियर? सब सेल होते हैं, ठीक है ना. वो जो हायर स्टैंडर्ड का पढ़ाऊंगा मैं आपको 10th और 11 समथिंग लाइक दैट, तो उसमें मैं हमारे पीएसएम में भी नहीं है, लेकिन उस समय वो निकाल के बताऊंगा मैं आपको स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके सब सेल कैसे होते हैं. चलो ठीक है ना. सो हियर दिस इज आल्सो क्लोरीन एटम. इट्स एटॉमिक मास नंबर 17 plus 20 37. In this positively charged proton 17, negatively charged electron also 17, chargeless particle in nucleus neutron 20. So the total number of proton or electron, either proton or electron, दोनों में से कोई भी, that is atomic number and it is denoted by letter capital Z. कितना है 17. इसका भी कितना है atomic number Z, 17 proton and 17 electron. So दोनों में से कोई भी एक लीजिए, that is atomic number of this. So both are the atoms of same element, they are having same atomic number 17 17, but see their atomic mass number. Clear? Its atomic mass number 17 plus 18 35, and atomic mass number of this 17 plus 20. Atomic mass it is denoted by, atomic mass number is denoted by capital letter A. So that is 27. So see here, these are the two atoms of the chlorine element. Their atomic number 17 17 same, लेकिन atomic mass number दोनों का different. So these are called as isotopes. Isotopes are nothing but these are the atoms of the same element, they having same atomic number but different atomic mass number. क्लियर हो गया? अब वैसे तो क्लोरीन का तो बच्चों हम लोग एटॉमिक मास नंबर एवरेज करके निकालते. इन नेचर जब इसके 3 एटम मिलेंगे 35 के, इन दैट टाइम 37 का कितना मिलता है 1 atom. It is found when 3 atoms of chlorine 35 are found, then that time with respect to that 1 atom of chlorine 37 is
found, so their ratio is 3:1. So average atomic mass number कैसे निकालेंगे? 35 के 3, so 35 into 3 plus 37 का 1, 37 multiplied by 1 divided by 3 plus 1, so total 105 plus 37 divided by 3 plus 1 4, so total 140 divided by 4, 4 1 are 4, 4 3 are 12, carry remain 2 and 2 20, 22, to 4 5 are 20, remain 2, 20 हो गया पॉइंट देने के बाद में, so 35.5, so 35.5 it is atomic mass number of fluorine. So atomic mass number की जो डेफिनेशन है बच्चों इन बुक, वो क्या कहते हैं? Number of proton and neutron present in an atom of an element is called as atomic mass number, but it is wrong क्योंकि क्लोरीन के इसमें तो 35 है, and in this nucleus of chlorine 37 proton and neutrons are there, but actual atomic mass number of chlorine हमने कैसा फाइंड आउट किया? By calculating average or by finding the average of 35 and 37. So boys and girls, so atomic mass number का perfect definition क्या है? Average of, average किसका? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, average of number of, या average of total number of, average of किसका? Total number of protons and neutrons found into the nucleus of an atom of an element, right? लेकिन ये एटम कैसे? All the possible types of atoms. ये एटम कैसे है? Into the all possible types of atoms, जो भी होंगे वो. Clear? So how we can define atomic mass number? The average number of, the average total number of proton and neutron found into the all possible types of atoms of an element is called as atomic mass number. जो भी एलिमेंट है बच्चों, उसके जो भी पॉसिबल एटम्स है, मींस उसके जो भी आइसोटोप्स है, वो सभी का आइसोटोप का एटॉमिक नंबर का एवरेज जो भी मिलेगा, दैट इज एटॉमिक मास. क्लियर? लेट मी, हम लोग कहां थे बच्चों? 1 सेकंड टाइम. कहां थे हम लोग? 1 सेकंड टाइम. क्लियर? सो बच्चों, for that, to calculate 1 second time, scientists took for that standard as a standard cesium atom. अब भैया मान के चलिए कॉपर रॉड है, in it atoms of copper are there, so always in any condition they vibrate except absolute zero temperature. Absolute zero temperature is the temperature at which vibration of the all the particles or all the entities or all the atoms or all the molecules which are present in that substance stop vibrating. Clear? लेकिन जनरली एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हम लोगों को अर्थ के ऊपर मिलना तो पॉसिबल नहीं है. क्लियर? जनरली मतलब नॉर्मली लैबोरेटरी में हम लोग क्रिएट करेंगे वो कंडीशन, वो बात अलग है, लेकिन नेचुरली ऑन अर्थ इट इज नॉट पॉसिबल. सो बॉयज एंड गर्ल्स, atoms of an element or molecules which are present in compound or in any substance continuously vibrate because of the kinetic energy which is present in them. Clear? So boys and girls, to find out the value of 1 second time, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, सीसीएम नाम का जो एलिमेंट है उसका एक आइसोटोप लिया, सीसीएम 133, उसका एटम ऑफ सीसीएम 133, it to vibrate at normal temperature and pressure. It to vibrate at
नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में ये कितना वाइब्रेट करता है, उतना समय जो भी होगा, राइट, दैट इज यूटिलाइज्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 सेकंड। दैट इज यूटिलाइज्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 सेकंड टाइम। और उसके जो वाइब्रेशन है बच्चों 91, 92, 6, 31, 773, इतना समय वाइब्रेट करता है वो, जो भी समय वाइब्रेट करेंगे वाटर इट में भी, लेकिन इसके वाइब्रेशन कितने होने चाहिए, 91, 92, 6, 7, 3, 7, 7, 0, कितने वाइब्रेशन होना चाहिए। देखो क्लियर कर देखो बच्चों, हाउ मेनी वाइब्रेशन, 631, सॉरी ये फिगर अब यहां पर टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, प्रेशर कैसा होना चाहिए, नॉर्मल, नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर, at normal pressure height of mercury column is 760 mm height, mm height of, Hg means hydrogen, hydrogen means mercury, mercury is used to measure the pressure in that instrument that is called as a barometer। तो बैरोमीटर का प्रेशर कितना होना चाहिए बच्चों, 760 हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, ठीक है ना। सो एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर cesium atom which is present into the cesium 133 element, it vibrate, और उसके कितने वाइब्रेशन बॉयज एंड गर्ल्स, हाउ मेनी वाइब्रेशन, 91, 92, 631, 773। अब वो लाख करोड़ मिलियन उसमें बोलेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि 1770, 31,000, 26 lakh, 31,919 करोड़ बोल सकते हैं। ऐसा बोलने की कोई मतलब ये नहीं है, अगर आपको जो भी आसान जाता होगा, मैं तो हमेशा इसको 91, 92, 631, 770 ऐसा बोलते रहता हूँ, क्लियर। अगर आप लोगों को ऐसा कहना है 919 करोड़, हाउ मेनी करोड़, 919 करोड़, हाउ मेनी लैक्स, 26 lakhs, how many thousand, 31,770। सीसीएम का एटम देखो बच्चों कितना रैपिडली वाइब्रेशन कर रहा है, एक सेकंड टाइम में कितना वाइब्रेशन हो रहे हैं उसके, व्हाट इज मीन बाय वाइब्रेशन, राइट। दीज आर द टू क्रेस्ट, दिस इज द मेन पोजीशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम फ्रॉम वन एंड पॉइंट, राइट, वहां से आ रहा है मेन पोजीशन, अगेन दिस एक्सट्रीम पोजीशन, फिर अगेन वहां से रिटर्न आ रहा है मेन पोजीशन, सेंट्रल पोजीशन, एंड दिस एक्सट्रीम पोजीशन, पहले वाला, दिस जर्नी इट इज कॉल्ड एज वन वाइब्रेशन। या इधर से काउंट करो, देखो एक्सट्रीम पोजीशन, मेन, एक्सट्रीम, अगेन मेन, पहले वाला एक्सट्रीम पोजीशन, क्लियर। यहां से ऐसा गया, ऐसा गया, ये वन वाइब्रेशन। या फिर मेन पोजीशन से एक्सट्रीम, मेन, एक्सट्रीम, मेन, ये वन वाइब्रेशन। तो ऐसे कितने वाइब्रेशन, 919 करोड़, 26 lakhs, 31,770। कितना हो रहा है वो, 919 करोड़ 26 लाख 31,770 टाइम्स, मींस 1, 2, 3, 4, ऐसा कितनी बार बच्चों,
91, 92, 631, 770 टाइम्स वाइब्रेशन सीसीएम एटम कर रहा है। उसके लिए जो समय लगता है फॉर दैट सीसीएम एटम, दैट इज 1 second टाइम। जस्ट इमेजिन what is the speed of number of vibrations of that cesium atom, cesium-133 बहुत ज्यादा है। क्लियर? एक सेकंड में कितना बार वाइब्रेट हो रहा है। क्लियर? और उस समय टेम्परेचर एंड प्रेशर कैसा है? नॉर्मल। कैसा है बच्चों? सो टाइम रिक्वायर, टाइम 1 second टाइम, it is a time required by atom of cesium 133 एलिमेंट। इसके लिए टू कंप्लीट हाउ मेनी वाइब्रेशन? 91 या 919 करोड़, 919 करोड़ 26 lakhs 31,770 क्या वाइब्रेशंस at normal temperature and pressure is called is called 1 second time. Is called 1 second time. ठीक है ना बच्चों? What do you mean by 1 second times? 1 second time ये टाइम है जिसके लिए सीसीएम एटम को एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर 919 करोड़ 26 लाख 31,770 वाइब्रेशन करना पड़ते हैं। This time required to complete 919 crore 26 lakh 31,770 vibration for atom of cesium 133 element at normal temperature and pressure. That time is called as 1 second time. Clear? समझ में आ गया बच्चों? 1 second time and the value of 1 second time it is fixed by the scientist. भैया इतने वाइब्रेशन सीसीएम 133 का एटम जो करेगा उसके लिए जो भी समय लगेगा दैट इज 1 सेकंड टाइम। अब इसमें अदर फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है क्या? नहीं। दैट्स व्हाई टाइम दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। इट इज कॉल्ड एज व्हाट इट कॉल्ड बॉयज एंड गर्ल्स? फंडामेंटल क्वांटिटी। क्लियर? सो बच्चों आज ये हम लोग 3 लेंगे। आप इसके ऊपर ही थोड़ा सा आज रिवीजन करो ना, बिकॉज यू आर इन ओनली 8th स्टैंडर्ड, राइट? तो इसके ऊपर रिवाइज करो, फिर कल हम लोग बच्चे वाले 4 लेंगे। ठीक है? दैट इज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये थर्मोडायनामिक टेम्परेचर होता है 1/273 पार्ट ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्लियर? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 12 ग्राम लिया उन्होंने। किसको लिया? मतलब 12 ग्राम क्या लिया? साइंटिस्ट टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अब 12 ग्राम ऑफ इनटू द 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप कितने कार्बन के एटम्स होते हैं उतना फिगर जो भी है दैट इज 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। क्लियर? वैसे 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट
one candela intensity of light. What do you mean by intensity of light? How much bright or dark that light is. Means intensity of light shows us how much darkness or brightness is there, and it is measuring candela. It is measuring candela. ठीक है ना बच्चों? भाई थोड़ा सा इसको रिवाइज करो आज. क्लियर? डेफिनेटली आप लोग अगर मेरा 8, 9, 10 या 7, 8, 9, 10 4 साल या फिर 9th और 10th ये 2 साल भी अगर आप लोग सिंसियरली करते हो, डेफिनेटली मैं इतना बोलता हूं आपको, right? I assure you that you can easily crack NEET or JEE. Clear? Now you are in 8th standard, so you are having golden opportunity because you are having 3 years, 8, 9, 10. Clear? Sincerely क्लास करो बच्चों 3 साल 8, 9, 10 और आपके अगर कोई भाई बहन 7th में उनको बोलो, राइट? या आपके भाई बहन रिलेटिव दोस्त 9th स्टैंडर्ड में है उनको बोलो. एंड जो मेरा लिंक है यूट्यूब चैनल के ऊपर उसको सब्सक्राइब करो. आपको मतलब उसको कंटिन्यू उसके ऊपर ये वीडियो आते रहेंगे. फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पियर्सन का तीनों सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं बच्चों सिंस फ्रॉम लास्ट 9, 10 इयर्स. क्लियर? और आपको इतनी गारंटी देता हूं कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा. ठीक है? बाय. डेप्थ ऑफ पियर्सन in 9th and 10th standard is much more even than ICSE. CBSE तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है बच्चों. ठीक है?